Assalamu alaikum. Yesterday, we completed various aspects and trends in Gupta age, but we were left with Gupta administration in its arts and architecture. Today, we'll be dealing with that portion. We'll be taking with Gupta administration and subsequently we'll be moving to cultural part of the Guptas. Let's start. Gupta administration. Where we said in Mauryas, there was much more centralization in administration, though there were elements of decentralization as well. But the areas of centralization were prominent in the decentralized areas. But here we will be seeing, and afterwards, from here onwards, we'll be seeing more decentralized approach in administration. You have to acquaint yourself with this decentralized approach. Now, first question, or the first thing that should come to your mind, that should be how can we expect a question from this portion. You don't have to go far away, or you don't have to go beyond beyond the times. Just you have to go 1 year prior in UPSC 2021. They asked about the administration decentralization of Mughals. Keeping that thing in mind, they can ask in any part, in any kingdom, in any empire. They can ask of any empire or any. They can ask of Vijayanagar. They can ask of even Guptas. The first thing that will be saying that we will be seeing what kind of administration was present and how is was divided. Empire was divided into various provinces, and these provinces were known as deshas or bhuktis. क्या इनको बोलते थे? देशाज और bhuktis. और उन provinces को various districts में divide करते थे, decentralized और करते थे. They were further decentralized or divided into various districts. And what were these districts known as? These districts were known as Vaishyas. Then, below districts, we do not go to a simple village level, but we'll go to cluster of settlement that would be called as cluster of villages, and they were known as vithis. Vithis, and this was further decentralized to one of that would be grama. Grama with big village, you know that. Now, question can come like this in Guptas. Arrange the following in ascending or descending order. अगर हमें बोला डिसेंडिंग तो देर ऐसे हमें देशाज और बुक्तिज, बुक्ति से लेकर वेशाज, वेशाज से विथीज, विथीज से ग्रामा. अगर असेंडिंग में बोला ग्रामा से विथीज, विथीज से वेशाज और वेशाज से देशाज और बुक्तिज. ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले साल ही मुगल एम्पायर का पूछा गया. तो किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से आपको फॉरगॉन नहीं लेना है. That is very important. Now, let's say something about the central administration.
Like in other empires, who was the head of the central administration? King. King was the head of the central administration. He was an embodiment of all powers. Embodiment of all powers. Means काफी ज़्यादा powers इसके पास हुआ करते थे. We remember, while observing or while seeing the political history of Guptas, we said that they used to adopt astounding titles. But that would be true here. उन titles से हमें साफ पता चलता है कि किंग कितना पावरफुल आदमी था गुप्ता एम्पायर में. क्या क्या थे वो what were those titles? Can you name few? Maharajas, Maharaja Adhikaras. Did we see it? And what was the Vikram Aditya? Also, following the, you have, or I will not be noting them again, but you will have to keep the same in mind. And king used to adopt divine status. This is very important. Where from do we know they used to adopt or they used to वो डिवाइन स्टेटस उनको वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे. ये किस प्रसिद्धि से हमें मिलता है? समदर गुप्ता की इलाहाबाद प्रसिद्धि से. बोलता है कि समदर गुप्ता ने कौन सा स्टेटस अडॉप्ट किया था? डिवाइन स्टेटस. हमें नहीं पता है कि बाकियों ने किया था या नहीं किया था, मगर हमारे पास टर्म आई द किंग्स इन गुप्तास यूज्ड टू अडॉप्ट डिवाइन स्टेटस. This is true. Whether we know it of a single king or we know of it of many other kings, that becomes immaterial now. वो चीज अब immaterial बन जाती है. What becomes more important? Important becomes, yes, the statement हमारे पास present आ ही जाती है कि kings वो क्या adopt करते थे? Divine status and very astounding titles which you know already what were those titles all about. Now, as in present times, the king was assisted by council of ministers or मंत्री परिषद. ये किसको किंग को कौन असिस्ट करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जैसे आज को करता है, आजकल भी करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट असिस्ट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करते हैं. वैसे ही गुप्ताज में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं मंत्री परिषद. और इनमें हम कुछ नेमिंग फ्यू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से प्रेजेंट थे? मंत्री, सचिवा, कुमार अमात्या और अमात्या himself. Etc. Not important to discuss what they used to do because textbook remains silent on these ministers what they used to do. But when we will say about the various bureaucracy or various officials that were present in Gupta times, elaborately they have been discussed in NCERT. Means that they become important for us to be remembered or to be known about. If you are done, then we should rub it. Should we rub it? Yes. Kumar Amatya or Amatya, it means same. If Amatya means minister, Kumar Amatya means one of the royal blood. Yeah, we'll be seeing it here only. Yeah. Now, there are various high-ranking officials. Keep note of these high-ranking officials. Before discussing
various high-ranking officials. Let me give you two sentences that may help you in any way. These officials, some of the important officials were hereditary in nature. Some of important officials क्या थे वो? Hereditary in nature. ये याद रखेंगे आप. In nature means they were hereditary. पहले बाप, फिर उसका सन, फिर उसके बाद उसका और औलाद, means ये खानदानी राज चल रहा था. और some of officials used to represent more than one position. ये important है आपके लिए. Some of officials used to hold more than one office. What were various officers? Now we should know these. Various officers. You know, the description about various officers will go along in the provincial part and district part and grammar part and grammar part. But if we'll be doing them likewise, उसी वक्त हम उन ऑफिसर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बताएंगे. जहाँ जो ऑप्शन हमें मिलेगा उसकी डिस्क्रिप्शन हम उसी वक्त कहेंगे. जो अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हमारे पास मौजूद थे उनकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ ही देंगे. फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन हम वहीं देंगे. लाइकवाइज इन अदर पार्ट्स एज वेल. जो ऑफिसर्स प्रेजेंट थे दैट वाज संधि विग्राहिका. ये किसका ऑफिसर था? पीस एंड वॉर का. मीन्स वी कैन से अगर पीस एंड वॉर की बात हो रही है हम इसको कह सकते हैं ये फॉरेन मिनिस्टर भी फॉरेन ऑफिस भी संभालता था. क्यों? वार तो दूसरे मुल्क के साथ ही हो सकता ना, पीस तो दूसरे मुल्क के साथ ही हो सकता ना. तो उसी का ऑफिशियल तो फॉरेन मिनिस्टर भी इसको कह सकते हैं. पीस एंड वॉर. कुमार अमथिया, ये जो प्रिंसेस थे रॉयल प्रिंसेस, ये ज्यादातर गवर्नर्स हुआ करते थे. महादंडनायका, महादंड नायका, ये क्या था? चीफ जुडिशियल ऑफिसर. क्या था? और जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा था कि some important officials used to hold more than one office, तो यहाँ जो कुमार अमथिया और महादंडनायका हरिसेना ने दोनों ऑफिसेस, हरिसेना जो कोर्ट पॉइंट था समुद्रगुप्ता का, उसने अपने वक्त दोनों ऑफिसेस संभाले. महादंडनायक एंड कुमार अमथिया फॉर एग्जाम्पल हरिसेना. हाँ, तो आ गई ये स्टेटमेंट हमारे पास बराबर. तो हवा में ये स्टेटमेंट नहीं थी. और कुछ और ऑफिसर्स की बात करें. बालाधिकृता, आर्मी के साथ ऑफिसर एसोसिएटेड था. किसके साथ? आर्मी. और भी है बट these are, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट हो सकती है. तो इतने ऑफिसर्स ठीक है. हाँ, बालाधिकृता, DHI.
You don't need to remember these officials, but you may be asked what was role of Mahadandanaika in Gupta administration. कोई हो सकता है क्योंकि chiefly मैंने वही इस्तेमाल कि उन्हीं ऑफिशियल्स का जिक्र किया है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पे है. तो अदरवाइज इससे भी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मनो नंबर में इससे भी ज़्यादा थी. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. बस ये चीज़ होना आपके मन में होना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी. किंग सारे काम खुद नहीं करता था. किंग को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाउ वी डेलिब्रेट इन एडमिनिस्ट्रेशन. वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट. ठीक है. नाउ वी गो टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. शुड आई रब इट? प्रोविंसेस. एम्पायर को किन में किया डिवाइड किया जाता था? प्रोविंसेस. क्या वो नाम था इन प्रोविंसेस का? देशास और बुक्तीज. यही था ना नाम. इन प्रोविंसेस को कौन गवर्न करते थे? उपारिका. मीन्स ये गवर्नर्स का काम करते थे. उनको उन गवर्नर्स को क्या बोलते थे? उपारिका. क्या? उपारिका. और ये किसका किस्म? गवर्नर्स दो किस्म के काम करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री काम और मिलिट्री वर्क. ठीक है. उपारिकास मीन्स द हेड ऑफ प्रोविंस और भुक्ति वाज उपारिका. और क्या करता था एडमिनिस्ट्रेशन में? ये क्या करता है? ये अपॉइंटमेंट करता था. किसकी? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेड. जो डिस्ट्रिक्ट का हेड हुआ करता था, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, उसको अपॉइंट कौन करता था? यही उपारिका. और अगर वाटर वर्क कोई रिपेयर करनी थी वो कौन करता था? यही उपारिका. रिपेयर ऑफ वाटर वर्क. मिलिट्री में तो पता है कि इनको जब जंग की जरूरत पड़ती थी तो ये अपनी सप्लाई मोबिलाइज करता था. इससे ज्यादा है तो मगर आपकी लेवल भी इतना ठीक है. तो शुरू रैपिड. अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स में कुछ ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनका आप खास ख्याल रखेंगे. अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं. क्या बोलते थे डिस्ट्रिक्ट्स को? वेश्यास. और जो हेड होता था उसका नाम क्या था? वेश्यापति. क्या? वेश्या. और उस वेश्यापति को कौन अपॉइंट करता था? अभी मैंने आपको बोला उपारिका. तो ये आप याद रखेंगे. उपारिका यूज्ड टू अपॉइंट वेश्यापति. This Veshyapati was assisted by various officials. Remember these officials because these officials are mentioned in your NCERT text. So these become important in that way. What were those officers? Nagara Seshri. Nagara Srishti. Sarthavaha. Pratima Kulika. Maybe you may not be asked what they used to do,
But you may be asked, the Nagara Shrestri, Sartava and Pratima Kulika in ancient time used to be, आप क्या बोलेंगे? District officers. ये नगरा श्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ करता था? चीफ बैंकर और मर्चेंट, चीफ बैंकर और मर्चेंट। और सर था वो क्या था? हेड ऑफ कारवान ट्रेडर्स। क्या था? और प्रतिमा कुली का क्या था? He was head he was chief craftsman and head of scribes। scribes जो कुछ लिख के, जो लिखने के काम होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उन स्क्राइब्स को एंशिएंट टाइम में क्या बोलते थे? कायस्थास। और ये आपकी टर्मिनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द कायस्थास इन एंशिएंट इंडिया वो नोन एज, आप क्या बोलेंगे? स्क्राइब्स। क्या? what they acted as? They acted as scribes. This would do for this administration. Let's move to Vithis. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या था? क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट था ना, वही क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट्स। और उस क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट्स को क्या कहते थे? विथी। क्या कहते थे? विथी। वही कहते थे ना। और जो इनका हेड हुआ करता था, हेड कौन था इनका? हेड का नाम क्या था? What was the name of the head? Ayukta. What was he known as? Ayukta. Please keep track of what I say. So once you lose track of all this, फिर आप खो जाते हैं इधर उधर। आयुक्ता और विथी महातारा, और maybe you may see in some other book, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। विथी महाता और महातारा, ये कौन था? क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट्स का विथी का हेड हुआ करता था आयुक्ता। और हम अब ले जाएंगे इसके बाद दैट विल बी ग्रामर। यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे ग्रामर में। ग्रामर का हेड हमने लोअर पहले उन टाइम से कंटिन्यूसली देखा था कि कौन था हेड? ग्रामी का, ग्रामा बोजी का। ग्रामी का इज मोर स्टैंडर्ड। और इस वहाँ विलेज में असेंबलीज, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हुआ करती थी। तो इसका ध्यान देंगे कि the villages or grandmas in Gupta's period used to have village corporate body। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है? हाँ, तो विलेज कॉर्पोरेट बॉडी, पंचमंडल, उसको क्या नाम था? पंचा। और एक विलेज एल्डर भी हुआ करता था वो, गांव जुट। क्या उसको क्या बोलते थे? महातारा। गांव जुट जैसे यहाँ हर्षित बैठे हेड
ग्रामीण का was है No, village elder, I'm saying elder. respectful ग्रामीण गांव में कोई देखो गांव का जुट कोई और हो सकता है मतलब सारे अफेयर संभालता हो मगर उनमें से फिर जो अगर वो किसी से सलाह लेता हो किसी बुजुर्ग आदमी से तो उस बुजुर्ग आदमी का नाम क्या था विलेज एल्डर महातारा. advisor type It was type of advisory because since we have a Pancha Mandala present in Grama, it means Gramika would not act on his own always, he would always be assisted or advised by this Pancha Mandala. इतना आपको clear है? Now, very important, apart from this decentralized administration, what we see 4th century onwards, this is a general statement, this is not particularly referring, I'm not particularly referring to Guptas, this is a general statement, by 4th century onwards, this 4th century onwards, what do we see? These larger kingdoms, these larger empires, such as Gupta, what they used to depend on Samantas. ये किन पे डिपेंड हुआ करते थे? समान ताज. These are type of vessels. ये किंग को क्या सप्लाई करते थे? होमेज एंड मिलिट्री मीन्स किंग को ही सप्लाई करते थे. अगर ये इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे कि खुद किंग बन सकते थे, आधे समानताज खुद किंग बने. मीन्स सम समानताज became king themselves who were powerful samantas. Otherwise, those who did not become king in themselves, they used to pay homage and military service to king. Homage plus military services. क्या समानताज खुद किंग बन सकते थे? हाँ, पावरफुल समानताज वो क्या बन गए? खुद ही किंग. और इन समानताज की डेवलपमेंट आप बहुत ही खतरनाक तरीके से देखेंगे. इंडिया की सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी का एक, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम अर्ली मिडिवल इंडिया में क्या देखते हैं कि फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म का टर्म आती है. तो समानता, रोल ऑफ समानता वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ दैट एंड राइज ऑफ दैट इंडियन फ्यूडलिज्म. These samantas used to control various resources such as land. तो फिर ये किंग को क्या करते थे जब उसको जरूरत पड़ती थी तो आर्मी प्रेजेंट करते थे, रिजर्व. ठीक है. तो यहाँ ये इस अगर आपको समानताज के बारे में ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि समानताज वर प्रेजेंट बिफोर this in Primorian period or before 4th century onwards. आप क्या बोलेंगे? No, by 4th century onwards, since king became powerful, territorial empire expanded, it became necessary for the king to depend on samantas. So samantas acted as vessels who used to supply king with resources and military services. समझ आया? And some of the samantas were even too powerful to they became king themselves. जब हम इंडियन फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो तो में देखेंगे तो इन समानताज का रोल आप वहाँ देखेंगे. और आपको उस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यू आर रीडिंग जनरल स्टडीज, यू आर रीडिंग हिस्ट्री एज जनरल स्टडीज पेपर, नॉट एज एन ऑप्शनल पेपर. तो इंडियन फ्यूडलिज्म उनके टॉपिक में आता है जो हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल पढ़ेंगे. ठीक है. व्हाट इज टाइम? 2:53. I think I'm too much tired. I cannot move on. I cannot continue. I am sorry. I had to leave. I'm finishing it way before our time of Anna, but I'm ill. I'm very inactive. I'm not able to speak properly. I'm not able to concentrate properly. I don't want you to miss any information. That's why I'll have to stop here only. Thank you so much.